Okay, today's lecture will be the first lecture on isomerism. Interesting chapter है. As such, अलग से कोई chapter NCERT will not get isomerism के बारे में. But if you see, this is one of the most important chapter क्योंकि it will be applicable. The concepts you are going to learn here will be applicable in many other chapters. In fact, every other chapter in future for the organic chemistry. ठीक है? That's one part. थोड़ा बहुत यहाँ जो सीखी हुई चीज है ना, that we are going to use in a chapter of inorganic also, which is called coordination compound. तो वहां भी थोड़ा बहुत यूज आएगा. There will be one section in coordination compound where we'll be learning isomerism in coordination compounds. तो वहां पे भी थोड़ा बहुत यूज होगा, not exactly same, but organic के लिए तो without, like I told you earlier also, GOC isomerism reaction mechanism. If you don't know organic chemistry, you can't handle the questions of organic chemistry. इसमें there are few parts which are conceptual, there are few parts which will give you the idea of कि जैसे PNC पढ़ा होगा ना मैथ में, permutation combination, है ना, you'll be getting the idea कि वहां पर PNC जैसी चीज है. That means if I start asking you number of isomers, ऐसा कुछ पूछूंगा मैं, then what will happen ना, you can't miss a case, you can't repeat a case, है ना. PNC में क्या होता है, if I am losing one case तो आंसर wrong हो गया, if I am repeating a case, कोई केस दो बार काउंट कर लिया तो again I am not getting the marks, है ना. तो आइसोमेरिज्म में वहां पे you'll get that type of thing where we need to be very much organized, तभी जाके exact right answer आएगा. If the answer is coming 10 isomers, if I am reporting 9 or 11, I am not going to get the marks, है ना. So that is the tragedy of that part. तो वो initial section है, but I'll tell you कि how to be organized while thinking about the number of isomers जिसकी बात करेंगे. But first thing, what is isomerism? So you'll be getting many compounds which are having same molecular formula, but there will be some point of difference. Because of that, those compounds will be having difference in properties. So when we are saying isomers किनको बोलेंगे, तो if I am having molecules with same formula but different chemical and physical property, why they can be different? Because of there can be some different structure or connectivity, or there can be some different spatial arrangement. If that kind of thing you are getting na, you'll be saying they are isomers. What types of isomers we'll be talking about? So roughly जो इसका जो classification है, that is done in this way, where you have got structural isomerism is one important part. If you see this one, so structural isomerism is first part, and then second part is stereoisomerism. Structural में again, if you see, we'll talk about chain isomerism, positional isomerism. Ring chain is just a special type of this. Functional isomerism, and functional का special type होता है tautomerism. And there are two extra, कहीं पर mention रहता है ring chain, कहीं पर नहीं रहता है, कहीं metamerism रहता है, कहीं पर नहीं रहता है. Sometimes we'll be getting that metamers are also positional isomers. Metamers can also be chain isomers. So those kind of things you'll be getting when we'll be discussing these types ना, तो वो देखेंगे. And then we'll have stereoisomerism. That means we'll be having some compounds which are having same structure, same molecular formula and same structure also, but there will be some difference in spatial position or arrangement, and then we start saying that कि इसमें stereoisomerism आ गया. ठीक है. So like I'll give you some examples. Let me show you just basic of it. किस डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले हैं. I'll just join it. Am I visible and audible both? Okay, now you just see. Yeah. So what I was saying, ki, if you see this compound, I'm just showing you two compounds. Okay. So if you see this compound and if you see this compound, now with these compounds, na, if you see what is the difference, like white is hydrogen, yellow is मान लो CH3 है, and green is chlorine. Can you tell me the difference? Sir, like where the sir yellow or white kind of position.
Okay. So what we are saying, if black is carbon, then we are saying कि एक ही carbon पर we have got both these groups है ना. But if you are seeing this one, we have got green and yellow present on two different carbons है ना. Then we are saying the connectivity itself is different. That means if I start doing the nomenclature of it ना, the basic nomenclature will be different. Like मान लो एक chlorine है एक bromine है मान लो. तो फर्स्ट केस में आई विल से दिस इज वन ब्रोमो वन क्लोरो इथेन इथीन बोल देंगे ना, डबल बॉन्ड है ये, दिस इज डबल बॉन्ड. सो नाउ विल से दिस इज वन क्लोरो वन ब्रोमो वन क्लोरो इथीन. इज इट ओके? इफ आई डू द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट विल से? दिस विल बिकम वन ब्रोमो टू वन ब्रोमो टू क्लोरो इथीन है ना. So nomenclature itself has become different, and that means we are saying that these two compounds are having two different structures. Is it okay? So then we'll call them structural isomer. What type of structural isomerism is there? We'll discuss that later. But right now we are saying that these two are structural isomers because the structure itself is different. When structure is different, you'll find that they'll be giving you two different basic nomenclature. If I am having two structures, इसका nomenclature basic जो अभी तक हम लोगों ने किया उसमें कोई difference नहीं आ रहा है, then we are saying कि they are definitely not structural isomers. बाद में फिर हम लोग stereo isomerism में फिर type ढूंढेंगे, but these two are structural isomers. Is it okay? ये clear है सब लोगों को? Any doubt? Anyone having any doubt? Now, if I give you another compound, I'll just change few things. Now, again, I am having two compounds. Are they having different structures? Structure is same. ध्यान से देखो, पहले कार्बन पे ग्रीन है, दूसरे कार्बन पे येलो है. कैन आई से द सेम थिंग फॉर बोथ द कंपाउंड्स? फर्स्ट कार्बन इज हैविंग ग्रीन, सेकंड कार्बन इज हैविंग येलो. इज इट ओके? है ना. तो नाउ इफ आई स्टार्ट डूइंग द नोमेनक्लेचर, दोनों को क्या बोलेंगे? वन ब्रोमो टू क्लोरो इथीन है ना. दैट विल द नोमेनक्लेचर ऑफ बोथ द थिंग्स ना. बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व इट ना, तो क्या डिफरेंस आ रहा है? इफ यू सी ग्रीन एंड येलो का डिस्टेंस, इफ यू सी दिस कंपाउंड, ग्रीन एंड येलो का डिस्टेंस देखो, ये थोड़ा डायगोनल टाइप का दिख रहा है ना, तो दिस विल बी ग्रेटर. एंड इफ यू सी दिस वन, यहाँ पर डिस्टेंस इज लेस है ना. देखो यहाँ रख के भी मैं दिखाता हूँ. यहाँ से मैंने ग्रीन येलो से ग्रीन तक पहुंचने की कोशिश की नहीं, ये देखो ग्रीन वाला पहले पहुंच गया. दैट मींस देयर इज डिफरेंस इन डिस्टेंस है ना. डिस्टेंस इज डिफरेंट है ना फॉर ग्रीन, इन बिटवीन ग्रीन एंड येलो. नाउ इफ आई हैव टू कन्वर्ट वन इनटू अनदर, मान लो इसको मैं चाहता हूं कि ये अगर मान लो ये येलो वाला इधर ऊपर आ जाए, समहाउ ये अगर रोटेट हो जाए, तो फिर ये येलो ऊपर आ जाएगा, व्हाइट नीचे चला जाएगा, एंड दे विल बिकम सेम कंपाउंड है ना. इज इट ओके? अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जस्ट कंफर्म मी, क्योंकि ये अगर समझोगे तो ही मजा भी आएगा, और देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि इफ आई हैव टू कन्वर्ट दिस वन, ये जो है ना ये वाला, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ये ऊपर वाले में. व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू रोटेट दिस बॉन्ड समहाउ, तो जाके अगर ये रोटेट होता, देन विल से दैट कि ये सेकंड वाला कंपाउंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता. बट यू नो दैट कि रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल है ना. एंड फॉर दैट वी नीड टू ब्रेक इट समहाउ. अगर मैंने इसको ब्रेक कर लिया ना, देखो अभी कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ आई एम कन्वर्टिंग इट. ठीक है, अभी देखो ये ऐसा कुछ करके, एंड देन somehow if I'm breaking these bonds, then I can manage it in a manner that will give me this one. अभी मैंने ब्रेक कर दिया, then I can convert this one into another one. So अब देखो ये दोनों बराबर हो गए ना. So now converting the previous one जो पहले था, converting previous one into this one required breaking of a bond है ना. If that type of isomerism is coming, तो पहली बात तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ गया, because there was difference in spatial position, but the structure was same. That's why it was called stereoisomerism. But within that stereoisomerism, you have to break the bond to convert one into another. Then that type of isomerism is called configurational isomerism, because you are changing the configuration, you are breaking bond to convert one into another. Okay, ये याद होगा, अभी हम लोगों ने काफी बात भी कर ली, सिस ट्रांस जैसी चीज हम लोगों ने मेंशन की हुई है. तो एक सिस था एक ट्रांस था, अभी दोनों को सेम बना दिया मैंने ना. तो if you have to convert cis into trans or trans into cis, you need to break the bond, then only you can convert one into another. So that type of isomerism is called configurational isomerism within the stereoisomerism. Now I'll give you another example.
मान लो अपने पास अगेन वी कैन हैव सम ग्रुप्स, okay, so if I convert one of these, it's like this one. Now, if you see in this position, you can see that ki green or yellow, red के बीच में there was some distance, and this is one compound, है ना? Now, if I rotate it, देखो मैंने rotate कर दिया, सिर्फ इसको मैं rotate कर रहा हूँ, and I am getting different special position, है ना? ये देखो ये distance इधर आ गया जो कि ये था. This was first just behind yellow or green, red was present, but the moment I'm rotating it, I'm getting different special position. अभी देखो white वाला इधर आ गया, इधर वाला red आ गया ना. So we are getting different kind of positions again. These compounds, if I am converting this, मान लो ये एक compound लिया और एक ये compound लिया. What I have done, I have simply rotated the बीच वाला bond, है ना, और बीच वाला bond rotate करके I can change the position. तो these are actually not considered. Some people understand that कि ये तो isomerism है ही नहीं. We'll see there will be some difference. तो इसको normally हम लोग या तो नहीं रखते या फिर इनको हम लोग बोलते हैं conformational isomerism. That means if I'm trying to convert this into this, it doesn't require breaking of a bond, but still there is some positional difference, and special positions are different, special distance is different, and that's why we are saying कि this is also stereoisomerism, but this is not configurational. If I try to convert this into this, any point of time, if I just rotate the bond, I'm converting one into another. That means we are not required to break any bond to convert this into this. बात समझ में आ रही है? So then we start calling them conformational isomerism. इसी को rotational isomerism भी बोलते हैं. कन्फॉर्मर्स बोलते हैं दो आइसोमर्स को, ऐसे जो दो आइसोमर एक और एक ये ऐसा मैंने ले लिया तो दे आर कॉल्ड, एक ये है और दूसरा ये ले लिया, तो देन दे विल बी कॉल्ड कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स और रोटेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. ठीक है, तो दिस इज वन, दिस इज अनदर. अब ऐसे कितने आइसोमर्स हो सकते हैं बताओ जरा? देयर कैन बी इनफाइनाइट. ऐसा किया तो भी, 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 तो वी आर गेटिंग इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, है ना? And that's why I told you कि whenever they are going to ask you ना कि what how many number of isomers are there, we generally avoid counting की conformational isomer, because we know that conformational isomers तो infinite होने वाले हैं. So whenever they are asking you know find out the number of isomers or find out the number of isomers including stereoisomers, even if conformational isomerism is the part of stereoisomerism, we don't count क्योंकि ये infinite है. तो हर क्वेश्चन का आंसर तो फिर इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? द मोमेंट वी आर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो फिर इनफाइनाइट आंसर हो जाना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वी जस्ट सी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. दैट मींस एक आता है ज्योमेट्रिकल, एक आता है ऑप्टिकल. दैट इज द टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. इज इट ओके एवरीवन? नाउ अब इतने से तुम्हारा काम आज के लिए जो विजुअल मेरे को दिखाना था वो काम हो जाएगा. बाकी अभी चलेगा जो पेपर पे चलेगा, एंड देन विल गो बैक टू, जब हम लोगों को जरूरत होगी, जब भी स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वी विल कम बैक टू दिस पार्ट. ठीक है, तो नाउ आई विल अगेन शेयर दोस टाइप्स ऑफ एंड आइसोमेरिज्म एंड देन विल सी दिस. ओके, सो नाउ स्क्रीन इज विजिबल ना? ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे ना, इफ यू सी फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. Normally you'll see very small points are going to come in chain isomerism or positional isomerism or all the types, but this becomes the most important or most conceptual isomerism in structural one. Then we'll go to stereoisomerism जिसमें geometrical भी आएगा and optical भी आएगा, and there will be one lecture in which we'll be discussing conformational again. ऐसा नहीं कि conformational important नहीं है, बाद में इसकी भी properties हम लोग देखेंगे और उसकी वजह से भी बाद में future में we'll be having there will be different kind of concepts coming due to the conformational isomerism. But यहाँ पे जो discussion detail में होगा, you'll see that कि पहला lecture तो almost ये जो different types दिख रहे हैं structural में, उसी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे.
Then उसके बाद फिर tautomerism पे you will be having 1 or 2 sessions, and then we'll go to stereoisomerism. वहां पर फिर geometrical एक सेशन, ऑप्टिकल 1 या 2 सेशन चलेगा. कंफॉर्मेशनल छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो that will be like half सेशन में हो जाएगा. Okay, now we'll go one by one. Stereoisomerism or constitutional isomerism. What is that? तो like I told you, अगर कनेक्टिविटी एटम्स की डिफरेंट हो जाए, है ना, एक में कार्बन पे ही, एक ही कार्बन पे Br और Cl दोनों था, एक में Br एक कार्बन पे, Cl दूसरे कार्बन पे, तो कनेक्टिविटी, द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज, स्केलेटन इटसेल्फ इज डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. ठीक है. दूसरा टाइप जो मैंने बताया, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म. व्हाट विल हैपन ना, तो यहां पर देखो क्या होगा ना, इफ यू ट्राई टू डू द नोमेनक्लेचर ना, यू विल बी गेटिंग द सेम बेसिक नोमेनक्लेचर फॉर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया. Sorry, you'll be getting different basic IUPAC nomenclature for two different structural isomers. Like I told you, if I give you the example, if I was writing this one, जो मैंने दिखाया था उसमें, if I write here bromine, chlorine here, and H here, if I give you C, double bond C, Br here, H here, and Cl here, and H here, and if I give you third example, where we have got Br, H, H, and Cl. Now, if I try to get की सबके nomenclature क्या है, first का nomenclature बताओ क्या लिखेंगे? What is the nomenclature of this one? It will be 1 bromo, 1 chloro, and then ethyl, है ना? That will be the nomenclature. मैंने इसका करने का कोशिश किया ना, तो देन यहाँ 1, यहाँ 2, तो देन 1 ब्रोमो 2 क्लोरो हो गया ना, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, एंड देन इथीन. देखो नोमेनक्लेचर इटसेल्फ इज डिफरेंट इन दीज टू केसेस, है ना. यहाँ पे 1 ब्रोमो के बाद 2 क्लोरो आया है, वी हैव गॉट 1 क्लोरो इटसेल्फ यहाँ पे, तो दीज आर डिफरेंट. सो जैसे ही आ गया, अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, इट इज C2H2BrCl, है ना. ऑल ऑफ दीज आर C2H2BrCl. But I have shown you three different kind of compounds. पहले का nomenclature दूसरे से अलग है. If you see the third one, again it will be having the same nomenclature, है ना. 1 bromo 2 chloroethyl, है ना. But when we are saying कि अब पहले और दूसरे का nomenclature अलग हो गया, then they are definitely structural isomers. But if I say second and third, first and third are also structural isomers because they have got different nomenclature. But if I am talking about second and third, then there is some difference. That difference is in terms of the distance between Br and Cl or H and H. तो H and H का distance यहाँ इतना है और यहाँ पर ज्यादा है ना. वैसे Br Cl का distance यहाँ पर देखो ज्यादा है, यहाँ पे कम था, है ना. So that's why we are saying कि if I am talking about the second and the third compound, they are definitely not structural isomer, but they are stereoisomers because there is some difference, है ना. तो दो ही टाइप है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इफ दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3, देन वी आर सेइंग 1 and 2 are structural isomer. 1 and 3 are also structural isomers. But if I say 2 and 3, then they are stereoisomers. अब उसी में हम लोग जानते हैं कि एक को सिस बोलते हैं, एक को ट्रांस बोलते हैं. दिस वन जिसमें दोनों H सेम साइड में आ रहे हैं, तो दिस इज सिस. तो इसके आगे नोमेनक्लेचर में फिर सिस लिख देते हैं और दूसरे वाले में ट्रांस ऐड कर देते हैं एज अ प्रीफिक्स. तो इन दोनों को इन जनरल वी आर कॉलिंग इट स्टीरियोआइसोमर्स. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? तो स्टीरियो में क्या आ रहा है, बेसिकली we have got same molecular formula and same structure, but different spatial positions or spatial arrangement of atoms or group with respect to each other. कोई भी दो के बीच में अगर different spatial arrangement दिख रहा है, then we'll say कि they are having stereoisomer. If there is no change in structure, or if they are having same molecular formula, same structure and same spatial arrangement also,
then we'll start saying that they are same compound. That means उसके लिए एक word use कर देते हैं homomers, but they are identical, है ना, कुछ difference ही नहीं है. Then we'll say that कि they are homomers. Sir, हाँ, sir, if in case 2 we swap Br and Cl का position, then will it be an isomer? फिर से बोलो. Sir, in case 2, if we हाँ, swap Br and Cl का positions, then नहीं, also they are will same it be an compound. isomer? Then they will become homomer because अभी फिर nomenclature हम लोग right से start करेंगे ना. Yes, sir. nomenclature का rule था कि अगर मैंने यहाँ मान लो, अगर किसी ने बोल दिया यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, it will have again same nomenclature because this time I will be counting it from this direction, है ना. It is again one bromo, one chloroethene. Yes, sir. Okay, and distance is also same. So if I am saying 2 और इसको अगर मैंने 4 बोल दिया, तो this is nothing but 2 is equal to 4. They are same compound. देखने का तरीका अलग कर लिया मैंने. मैंने अपनी आंखें अलग एंगल से लगाई हैं, बट सेम कंपाउंड को देख रहा हूं, है ना. मतलब तुमने जो आगे से देखा, मैंने उसको पीछे से देखा है, इसलिए मेरे लिए जो राइट में दिख रहा है तुमको लेफ्ट में दिख रहा है ना. सिंपल. तो अलग तरीके से देखने से कंपाउंड तो अलग नहीं हो जाएगा ना. तो इट इज जस्ट टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम कंपाउंड, है ना. ओके, चलो. अब बिफोर एंटरिंग इनटू दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स में, लाइक आई टोल्ड यू, whenever they are going to ask you number of structural isomers batao, then you need to be very much organized in thinking or while making the strategy. That's why I told you, जैसे मैंने कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया ना, बोल दिया I am having C3H8O. Now how many structural isomers I can get? अब ऐसा एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो देन आई टोल्ड यू, ऐसा रैंडम नहीं जा सकते. कुछ भी बना के चेक कर रहे हैं, एक बनाया, दो बनाया, चार बनाया, एफर्ट मारा, कुछ तो निकल के आ गया, रैंडम रिपोर्ट कर दिया. दैट वी डू बिकॉज आई टोल्ड यू वी कांट मिस द केस, वी कांट रिपीट द केस, है ना. कभी कभी होता है कि बनाते स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर दो बार दो तरीके से, लाइक आई टोल्ड यू अभी 2 and 4 मैंने दिखाया. 2 and 4 अपीयरेंस वाइज डिफरेंट दिख रहा है, बट दे आर एक्चुअली सेम कंपाउंड्स. तो ऐसा ना हो कि केस रिपीट हो जाए एंड कोई केस छूट भी ना जाए. That's why we need to be very much organized. And the first step of being organized is a term called degree of unsaturation, which you are going to define. तो कोई भी फॉर्मूला देंगे ना, तो सबसे पहला काम करेंगे, we'll be calculating a mathematical quantity which is called degree of unsaturation. क्या बेनिफिट होगा उसको समझेंगे. पहले we'll see the definition of this degree of unsaturation. In fact, this is not definition, it is a formula. So this is a term, degree of unsaturation. इसका फॉर्मूला क्या है? If C is number of carbon atom, M is all the monovalent atoms like hydrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. P is polyvalent atoms like nitrogen, phosphorus. But we have to ignore the presence of oxygen and sulfur while calculating this degree of unsaturation. इसी को unsaturation factor बोलते हैं, इसी को hydrogen deficiency index बोलते हैं. अब ये जो कैलकुलेशन है ना, पहले तो कुछ कैलकुलेशन करके देख लेंगे एंड देन विल आइडेंटिफाई कि ऐसा करने से क्या हो रहा है. ठीक है. लाइक आई गिव यू सम एग्जांपल्स. मान लो अपने पास कुछ फॉर्मूलाज है जिनका डीओयू बताना है. तो इफ आई गिव यू दिस वन एंड इफ आई गिव यू, एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जैसे अभी यही दो एग्जांपल देखते हैं. इफ आई हैव टू कैलकुलेट डीओयू फॉर दिस कंपाउंड, what we'll do, carbon atom 4 है, plus 1, C plus 1 हो गया, minus, while writing this I'll write all the monovalent atoms including hydrogen, कोई halogen रहे तो वो भी. तो यहाँ पर we have got 8 hydrogen atoms, है ना. तो we are writing 8 minus, there is no nitrogen or phosphorus, so we are writing 0 and divided by 2. So that gives you 4 plus 1 minus 4. We are getting 1. So that's the degree of unsaturation of any compound which is having molecular formula C4H8O. Similarly, in the second compound, I'll give you another way also. इसी चीज को देखने का दूसरा तरीका है. इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक 2C+2 एंड देन माइनस M प्लस P, है ना, बाय 2, है ना. सेम एक्सप्रेशन है. तो नाउ इसी को देखने का दूसरा तरीका है, अगर वर्बली करना है, ऐसा बैठ के फॉर्मूला नहीं रटना है, तो डीओयू पता करने के लिए क्या करना है,
जितना कार्बन है उसके डबल में 2 ऐड कर दो, तो 6 कार्बन है उसके डबल में 2 ऐड कर दिया, ठीक है। माइनस ऑल हाइड्रोजन एंड हैलोजन, तो 6 हाइड्रोजन है और 1 हैलोजन है, तो वी हैव गॉट 7, एंड प्लस ऑल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो लाइक नाइट्रोजन 1 है तो +1 कर दिया, इग्नोर ऑक्सीजन और सल्फर, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखो हो गया 12 + 2 14 + 15 - 7 is 8, 8/2, this is coming 4. Is it okay? So now once we are knowing the formula, we can identify ki how much will be the DOU. Any doubt in this part? चलो तो एक काम करो, कुछ कैलकुलेशंस दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके देखो। सॉल्व दिस क्वेश्चंस, सबका DOU निकालना है। Sir, could you please scroll up for a second? Yeah. Thank you, sir. समझ ना? Yes, sir. ओके, अभी यहाँ अप टू 8 कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए। Yes, Sarang, your answer is right. नील का आंसर भी अभी तक राइट है, whatever he has reported. To 8 done. Yes, Mahak, you have got one or more answer in one answer is incorrect till now. Udayan, you has got the right answer. Neil, you have got yes, right answer so far. Ishan, your answer is till now it's right. Yes, yes, your answer is also right till now. Whatever you have reported, yes. चलो फिर देखते हैं करके now, and we'll start learning with this part also कि ओके चलो वेरीफाई कर लेते हैं, काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट DOU, आई टोल्ड यू या तो फॉर्मूला रट्टा मार लो या फिर जो मैंने तरीका बताया वो भी रट्टा ही है, मतलब दिस इज द सेम फॉर्मूला है ना। व्हेन आई से दिस इज सेम एज दिस वन है ना, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस तरीके से देखते हो। लाइक व्हाट आई टोल्ड यू, कार्बन के डबल में +2 माइनस ऑल हाइड्रोजन एंड हेलोजन, दैट मीन्स 12। अभी फॉस्फोरस या नाइट्रोजन तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0। दिस वन will be 8 into 2 plus 2 minus 10 directly, oxygen को ignore करना है, and that's why we'll be getting divided by 2, we are getting 16 plus 2 18 minus 10 8/2 4 आ गया।
इसके लिए कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, दैट इज 20, minus all hydrogen and halogen, that means 11, plus nitrogen by 2. That means we have got 20 plus 1, 21 minus 11 is 10, and that divided by 2 is 5. Sixth one, we have got कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, 10, minus all hydrogen and halogen, that means 11, plus nitrogen by 2. We are getting 8 plus 2, 10, plus 1, 11, minus 11 is 0, so this will be 0. If you calculate this one, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा minus 5 divided by 2, this is coming 0.5. 0.5 or any fractional DOU is representing that it is not a normal neutral molecule, it must be an intermediate kind of. Okay, so carbocation आ जाए या carbon ion आ जाए या free radical आ जाए, in those situations you are going to get the fractional DOU. If you calculate it for benzene, then 6 into 2 plus 2 minus 6 divided by 2, and that is 14 minus 6 is 8, by 2 is 4. Any doubt up to this point? Any doubt? Now if you observe these numbers na, what are they representing? अच्छा, 2 प्लस या 2 माइनस आ गया, then you will be getting again integral. जैसे मैंने इसका पूछ दिया ना, if this is the compound minus and minus, or if I say this is the compound plus and plus, then again you will be getting integral value, क्योंकि 2 प्लस या 2 माइनस आ जाए तो फिर से वो इंटीग्रल आ जाएगा, है ना? If you see this compound, इसका फॉर्मूला क्या दिख रहा है? We have got 4 कार्बन, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एंड यहाँ पे यू विल बी हैविंग 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, है ना? तभी तो 3 बॉन्ड हो गए और एक माइनस आ गया, तो वी आर गेटिंग C4H4. फिर से देखो DOU अगर कैलकुलेट करोगे ना, 4 के डबल से 2 ज्यादा, 10 minus 4 by 2, वी आर गेटिंग 3. इज इट ओके? एंड यहाँ पे इफ यू सी दिस वन इज अगेन सेम फॉर्मूला आएगा, विल बी गेटिंग C4H4, एंड अगेन वी आर गेटिंग 3. नाउ if you see benzene, benzene कैसा होता है? तो if I draw just one canonical structure, we are getting this one, and the number coming here is 4, है ना? What is the significance of this number? Because आगे के क्वेश्चन करने में it will help you. If I am having any degree of unsaturation ना, other than the charges के कारण अलग से आ रहा है, every charge is contributing 0.5 जैसा, ठीक है? So that's one part. लेकिन other than that, if I am having a neutral molecule ना, which is not having any charge, then degree of unsaturation always indicates the number of pi bonds and the number of rings. Okay, like benzene mein, how many rings we have? Benzene mein, how many rings we have? One. There is just one ring, and how many pi bonds are there? 3, है ना? तो 3 plus 1 4, इसलिए देखो 4 आ गया. तो in future, if I know the structure, then I don't have to calculate it by the formula. I can just observe the structure. जैसे अगर मैंने एक कंपाउंड दे दिया तुमको 1 2 3 4, एंड इफ आई गिव यू दिस वन, ये दे दिया है. अब इसका फॉर्मूला मैं निकालने जाऊंगा ना, तो वी हैव गॉट 4 कार्बन एंड वी हैव गॉट, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 2 3, दैट बिकम्स 8, तो C4H8O. अभी मैंने ये फॉर्मूला से यहाँ निकाला, तो वी हैव गॉट 1, बट इफ आई नो द स्ट्रक्चर ना, आई कैन सी इट, हाउ मेनी रिंग्स वी हैव इन दिस कंपाउंड, हाउ मेनी रिंग्स वी हैव? No ring, है ना? 0. There is no ring. How many pi bonds are we are having? 1 pi bond, है ना? So ring 0, pi bond 1, total is 1, and that's why we are getting degree of unsaturation 1 for this compound, है ना? So now in future, there can be two ways. If they have given you the molecular formula itself, but not the structure, I have to use the calculation by the formula itself, है ना? जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है. But if I have got the structure, like in the remaining compounds, if you see, we have got the structure, then in those cases I don't have to calculate, मतलब structure से formula पे जाऊंगा फिर मैं yeah. So what I was saying कि in future, अब अगर structure known है,
So I'll not go for the formula. I'll just count the number of pi bond and the number of ring. अभी फटाफट बाकी के आंसर्स कर दो, अभी तो देख के हो जाएगा. So just a question. Hmm. So degree of unsaturation will be equal to the number of structural isomers. नहीं 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 नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि how to use this term called degree of unsaturation. This is a mathematical quantity which will help you, but this is not the number of structural isomers. Okay, sir. चलो फटाफट करते हैं. इसके लिए बताओ कितना होगा. We have got one ring, one pi bond है ना, 2 आ जाएगा. You can find out the formula and उसके बाद भी अगर कैलकुलेशन भी करोगे again you will be getting 2 only. इसके लिए बताओ जरा 10th के लिए. What is the answer for this one? 10th का. Sir, 8. Sir, We 8 have got होगा. 2 rings and we have got 6 pi bonds है ना. So 2 plus 6 is 8. Simple. If you see this one, we have got 2 rings. How many pi bonds? How many 8. pi bonds? 8 ना. रिंग के अंदर इसमें 3 है, इसमें 3 है और यहाँ पे 2 है. That's why 8. So that's why we'll say कि इसका degree of unsaturation is 10. What about this one? Sir, 10. We have got 3 rings and we have got 3 plus 2 plus 2, 7 pi bonds. So that's why 10. This one is having 1 ring plus 4 pi bond. 5. 14th में we have got 3 ring plus 3 plus 2 plus 2, 7. 10. What about this one? So is it 1? No. Now, this kind of three-dimensional molecular structure, if you are getting, na, there are two ways. एक तरीका तो अपने पास हर बार है ना कि we can get the molecular formula and you can identify that है ना. तो इसके लिए if you see the formula, we have got 8 carbon है ना, and every carbon is having just one hydrogen. So this formula is C8H8. अब यहाँ से if I have to calculate DOU, I'll write 8 into 2 plus 2 minus 8 for hydrogen divided by 2. This is coming 5. But the trick is, for these kind of things, degree of unsaturation is number of phases minus 1. How many phases we have got in this compound? 6 phases, na? 6 minus 1 is 5. So now, what we have learned till now, degree of unsaturation, formula se to we have already seen that. But if I know the structure, two things we have learned. First thing is, in general structure, if I have got a ring, pi, both, all situations are can be possible. Then we'll say degree of unsaturation is total number of rings plus total number of pi bonds. Is it okay? So double bond के लिए it will contribute 1. Triple bond में 2 pi bond है तो it will contribute 2. For every ring it will contribute 1. Is it okay? So if I have got a double bond, it will contribute 1. If I have got a triple bond, it will contribute 2 because that is having 2 pi bonds. And if I'm having a ring, that will also contribute 1. If I'm having a 3D object, जैसे QN ऊपर इसको QN बोलते हैं, so then for that we have got कि number of phases minus 1 will give you the degree of unsaturation. In case of confusion, हम लोग formula तो any time निकाल सकते हैं. We can see that कि we have got 8 carbon atoms है ना, and every carbon atom is just having one hydrogen क्योंकि बाकी 3 कार्बन के साथ ही बॉन्ड बने हुए हैं. We can find out कि इसका formula is C8H8 and we always have the formula of degree of unsaturation to calculate the DOU है ना. Any doubt up to this point? Any doubt? Now, अब इसको यूज कैसे करना है? किसी ने बोल दिया मुझे बताओ जरा C3H8 के सारे स्ट्रक्चर्स बताने हैं एंड C3H6 के सारे स्ट्रक्चर्स बताने हैं. Now, like I told you, रैंडम नहीं जा सकते कि मैं बना बना के चेक कर रहा हूं एंड देन उसके बाद फिर कुछ मिल गया कुछ नहीं मिला, ये वाले केस में नहीं जा सकते.
तो वी नीड टू बी वेरी मच ऑर्गेनाइज. तो ऑर्गेनाइज होने का पहला रास्ता है, विल जस्ट कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. सो इफ आई आस्क यू, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? C3H8, इट इज 0 है ना? 0. It is 0. And if I calculate this one, then we are getting 1, है ना? Is it okay? Now, जितनी भी possibility C3H8 की होगी, if degree of unsaturation is 0, that means there cannot be any ring, there cannot be any double bond or triple bond. Is it okay? बात समझ में आ गई ना? So that's why I am saying, जैसे ये पता चल गया ना, we are saying there will not be any ring, no double bond, no triple bond. तो नाउ अब पता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होने वाला है, एंड वी हैव गॉट थ्री कार्बन एटम्स. तो 3 कार्बन एटम का एक चेन बना लिया. दिस इज द 3 कार्बन एटम का चेन. अभी कोई वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है इसमें, यही एक कंपाउंड है. इज इट ओके? हम लोगों ने 3 कार्बन का एक चेन बना लिया, एंड सब पे हाइड्रोजन डाल देंगे. तो दिस इज हैविंग ओनली this kind of thing. This is the only possibility. But if I go for this compound, now DOU1 का मतलब क्या है? Can it have a triple bond? Can it have a triple bond? No, sir. नहीं ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का 2 कंट्रीब्यूशन था, फिर यहाँ तो 1 ही है. Can it have a double bond? Yes. Can it have a ring? Yes, sir. Like But only both one. of them cannot be together, है ना? ऐसा नहीं होगा कि डबल बॉन्ड भी हो रिंग भी हो. तो we'll say either we have got one double bond or one ring. दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है. तो देन दैट गिव्स यू आइडिया कि अगर मेरे पास 3 कार्बन है, अगर ओपन चेन में देखना है तो वी हैव गॉट दिस वन. अब किसी एक जगह मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, है ना? तो चलो इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखा देता हूं मैं. आई हैव गॉट 3 कार्बन, नाउ आई हैव टू पुट अ डबल बॉन्ड, तो ये डाल दिया. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. मैंने अगर ये लिख दिया ना, तो दिस इज अगेन सेम, है ना? दीज टू आर सेम. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट कंपाउंड्स. द मोमेंट यू हैव डाउट, तो नॉमेनक्लेचर कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा. यहाँ पर नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, यहाँ पे नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी. वी आर गेटिंग द सेम कंपाउंड. तो ये दोनों सेम ही है. तो वी हैव गॉट वन हेयर. एंड नाउ ओपन चेन में देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. बट इफ यू गो टू रिंग, वी हैव गॉट एक 3 मेंबर रिंग बना ही सकते हैं ना. तो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी, बट वी डोंट हैव टू पुट एनी. तो इसके दो ही फॉर्म मिल गए ना. इज इट ओके? तो इट कैन बी ओपन चेन, इट कैन बी रिंग आल्सो. तो वी हैव गॉट टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. इज इट ओके? विवान, अभी समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड जो मैंने बोला, और यू हैव डाउट, विवान? So can you just repeat what you did after C6? Okay, what I was saying, C3H6 का डिस्कशन ना, that you missed ना. Even the C3H8 का Okay, तो C3H8, चलो मैं फिर से बता देता हूँ. C3H8 में we have got DOU equals 0, है ना? Yeah. If DOU is 0, that means there cannot be any ring or double bond or triple bond. तो अपने पास 3 कार्बन है, उसी को अरेंज करना है. तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन, है ना? हाइड्रोजन अरेंज करने नहीं जाते. हाइड्रोजन के अप्रोप्रिएट नंबर्स विल बी गोइंग टू एवरी कार्बन, है ना? दैट विल मैनेज इटसेल्फ. अदर आइटम्स आते हैं, देन विल स्टार्ट पुटिंग कि Cl आ गया तो कहां पे रहेगा. कॉर्नर पे रह सकता है, मतलब टर्मिनल कार्बन पे हो सकता है, इंटरनल कार्बन पे हो सकता है. दैट विल गिव यू द पॉसिबिलिटी. बट सारे के सारे हाइड्रोजन है, तो वी हैव गॉट जस्ट वन पॉसिबिलिटी, एंड दैट इज दिस मच. बट इफ आई हैव गॉट C3H6, now we are getting degree of unsaturation 1, and 1 तो ring भी contribute करता है, double bond भी contribute करता है. तो we have got two cases. One, if it is a ring, then we have got one possibility. If it is not having a ring, then there must be a double bond. So we have got another possibility, है ना? So Yes. what I am telling you, that this gives you idea to be organized, and in that manner you cannot miss a case if you are totally organized, है ना? तो बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखेंगे, एंड विल हैव दैट आइडिया कि इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ. दीज वर जस्ट टू एग्जांपल्स कि हाउ DOU इज हेल्पिंग यू टू गेट द आइडिया कि कंपाउंड में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता.
Any doubt up to this point? तो अब क्या करेंगे ना, I'll give you the आइडिया कि जब अपने पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा तो उसमें DOU 0 हो गया तो क्या होगा, 1 हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है, 2 हो गया तो क्या पॉसिबिलिटी आती है, बताओ DOU 2 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रिंग एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, इफ आई एम हैविंग DOU equals 2, what are the possibilities we are looking for? Raima, tell me. So triple bond. One triple bond is possible, or So two double bond. two double bond is possible, or Ring also. how many? Two. Two rings are possible. Any other possibility? So Ajay? one ring, one double. One ring, one double bond is also possible, है ना? That's why I told you. If you are organized, then you should not miss any case, है ना? तो these are the possibilities you will be looking for, है ना? तो that's why I'm telling you कि हम लोग क्या करेंगे ना? I'll give you all the pictures कि कौन से केस में क्या जाने वाला है, and then उसके बाद फिर we'll try not to miss a case. जैसे ही miss करोगे तो you will be getting the wrong answer, and there is no consolation prize for this one. This type of question they'll be asking you number of isomers, मान लो 12 है, तुमने 11 भी काउंट कर लिया ना, if you are reporting 11 you will be getting negative marking on. तो ये थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा rude टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें you are not going to get any marks for your effort if it is not 100% correct. So now I am starting with DOU equals 0. DOU 0 का मतलब there is no double bond or ring or triple bond, है ना? कोई multiple bond भी नहीं होगा, कोई triple bond भी नहीं होगा. जैसे if I talk about C4H10, अभी तो C3H8 में तो there was just one possibility, है ना? तो 1 carbon 2 carbon में there are no even in 3 carbon there is no other possibility, we have got just one compound, है ना? तो अब if I'm talking about the examples, तो जैसे if you have got CH4, मैंने बोल दिया, we can have CH4, there is just one possibility, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन डाल दिए. If I give you C2H6, ये सब DOU 0 वाले हैं, if you calculate you will get that. तो इसका मतलब है we have got just one possibility, ethane, है ना? That is the only possibility. If I have got C3H8, अभी just discuss किया था, we have got just one possibility, this is the only possibility, है? But if I have got C4H10, how many possibilities we can have? If I say I have got C4H10, how many possibilities we are getting? Okay, Udayan has given me the answer. Mahak. Okay. जो सबसे हाईएस्ट बोलेगा मैं हमेशा उसी से पूछूंगा, है ना? बिकॉज दैट पर्सन विल बी क्लेमिंग कि इतना है, हो सकता है बाकी लोग मिस कर रहे हो, या फिर जिसका हाईएस्ट आएगा हो सकता है उसने रिपीट कर दिया हो. वी नीड टू सी ऑल द पॉसिबिलिटीज. तो मार्क ने हाईएस्ट नंबर बोला है. आई विल गो टू मार्क. और यू आर गेटिंग 3. टेल मी. सर मतलब एक पूरा ओपन चेन वाला, ओके. एक में मतलब एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से ज्वाइन होता है. ओके, नाउ अभी इसमें ऑर्गेनाइज होने का क्या तरीका है? अच्छा, नील तो 4 पे चला गया. नील, चलो मैं बताता हूँ कितना मैं सोच पाता हूँ, उसके आगे ऐड करना जरूर, क्योंकि देन यू विल रियलाइज कि अगर मिस्टेक हुआ है तो क्यों हुआ है ना. तो इफ यू आर मैं बोलता हूँ कि मान लो इसके आंसर मैंने बोला 2 ही होगा एंड यू आर सेइंग 3, तो एक्सप्रेस दैट यू आर हाउ यू आर गेटिंग 3, बिकॉज इफ यू हैव डन सम मिस्टेक यू विल नॉट रिपीट इट इन द एग्जाम, है ना. तो नाउ आई नीड टू बी ऑर्गेनाइज. तो जब भी हम लोग जैसे वंस वी हैव डिसाइडेड ना कि ओपन चेन होने वाला है, कोई भी रिंग नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, तो ओपन चेन में वी हैव गॉट 4 कार्बन, तो आई कैन टेक द पेरेंट चेन विद 4 कार्बन, है ना. दिस इज द एग्जांपल जिसमें 4 कार्बन का मैंने पेरेंट चेन ले लिया ना. There is no other possibility in this case. I can have second case where we can take 3 carbon का parent chain, and now we have got a extra carbon, है ना. अभी तो 3 ही लिया है, तो we have got extra carbon. कहाँ पे रख सकता हूँ? Can I put it here? That No. extra carbon? No, sir.
नहीं ना, क्या हो गया, क्या गड़बड़ क्या हुआ? So वो वापस parent I'm choose getting the first compound, repeating the first compound, and that's why terminal position पे हम लोग extra carbon नहीं ऐड करते हैं कभी भी, because this will give you the previous one, है ना? And that's why we have just one option, and that is the बीच वाले कार्बन पे we'll be putting this one. Now ये हो गया, ये possibility थी parent chain with 4 carbon. This is the possibility with 3 carbon. एक ही possibility है. Now just if I try to make a parent chain of 2 carbon, बच गए 2 कार्बन, किधर रखूंगा? अगर मैंने एक यहां रखा, एक यहां रखा, क्या होगा? so वापस initial chain वाला वाला मिल जाएगा. अगर मैंने एक यहां रखा, दोनों यहां रख दिया, फिर क्या होगा? second वाला मिल जाए. सेकेंड वाला मिल जाएगा. मतलब ये दोनों कार्बन टर्मिनल हो गए. टर्मिनल पे कभी भी ऐड नहीं करते. वंस वी हैव डिसाइडेड ना, आई हैव टू गो विद दिस मच लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, then I cannot add any extra carbon on the terminal position because that will be giving you some previous case, है ना? ओके, मार्क तीसरा क्या आया था? सर वो 5 कार्बन का बन गया था गलती से। ओके, ठीक है. तो ये भी देखना है कि कार्बन एक्स्ट्रा नहीं कर लेना है. नील, tell me your So by mistake I got two, then by mistake I counted the cyclic ones also. I realized अच्छा, तो later. साइक्लिक में क्यों नहीं जाना है? Yeah. So in zero they won't be. Because DOE is 0. हाँ. The moment Yeah, I'm yeah, making a that's ring true. ना, देखो ना, मैंने अगर ये रिंग बना दिया ना, it is having formula C4H8, है ना? सो इसकी हाँ. दो ही पॉसिबिलिटी है. ये जो पाला वाला है, इसी को N ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं. We call it N ब्यूटेन, and this is called isobutane. तो I ब्यूटेन भी लिख देते हैं या isobutane भी लिख देते हैं. Is it okay? अब ये इतना ही नहीं, आगे से पता चला कि these are the two skeleton for any 4 carbon atoms, है ना? If I have got open chain में 4 कार्बन आ रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला, in future I'll give you C4H8Clbr. Now 4 कार्बन के साथ कार्बन का अरेंजमेंट यही होने वाला है. We cannot have any other arrangement with 4 carbon in open chain. Is it okay? तो ये फ्यूचर के लिए तुम्हारे पास रेफरेंस आ जाता है. अभी मान लो मैंने एक कंपाउंड दे दिया तुमको. If I give you a compound C4H8Br2, चलो इतना ही दे दिया. DOU 0. ना, अभी कैसे सोचेंगे? तो we should not be worried about the hydrogen at all if I'm taking care of the DOU. ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड मार दिया DOU 0 है, या रिंग बना दिया DOU 0 होने के बाद. We cannot go in that way. But if I'm taking care of DOU, I'm already taking care of the number of hydrogen atoms. तो वो काउंट करने की कभी जरूरत नहीं. But if I ask you C4H8Br2 and if I ask you how many structural isomers we are going to get, what will you say? Okay, let's see the possibilities. So like I told you, DOU 0 है, तो will not form any ring, will not put any double bond. Now we have got एक basic skeleton यही है और एक basic skeleton यही है. And now we have got two Br which we need to attach. Br को टर्मिनल पे भी अटैच कर सकते हैं ना. So now if I have to put, तो इस फ्रेम में if I have to put कहाँ कहाँ अटैच कर सकते हैं, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है. We can put both of them on terminal. That is one possibility. Second possibility, एक यहां रखा और एक यहां रख दिया. That is second possibility. Third possibility, I can put one here and another here. That is third possibility. Fourth possibility, एक यहां रखा, एक यहां रख दिया. Any other possibility? हाँ, तो दोनों बी आर मैंने बीच वाले पे रखा, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना.
Any other possibility? सर दोनों को एक साथ सेकंड वाले पे रखो. हाँ, सेकंड वाले पे दोनों को एक साथ रख दिया, एक BR यहीं पे और दूसरा BR भी यहीं पे. Any other possibility? कोई भी और सोचोगे? We need to see. That's why I'm telling you. ये सारे एग्जांपल जो होते हैं ना, यहाँ पर we need to be very careful. We can't miss a case. We can't repeat a case. If I say I have got यहाँ पे BR और यहाँ पे BR. Am I repeating a case or is it a new case? So you will It's be repetition repeating of the third. They're Repeating. repeating. It is same as this one, है ना? Okay. The moment you get a doubt, let's start doing the nomenclature, and you will get the idea कि यहाँ पे जब numbering करूँगा ना मैं, तो I'll start with here 1 2 3 4. अब ये structure दिया है तो I'll do the numbering from here to here. Again we are getting 1,3 dibromobutane, है ना? इसको भी हम लोग 1,3 dibromobutane ही बोलेंगे. Is it okay? So that's why I'm telling you कि we need to be very much organized so that we don't miss a case, we don't repeat a case. विजुअल अपीयरेंस हो सकता है दो कंपाउंड का अलग अलग दिखे, जैसे मैंने अभी ये कंपाउंड दिया ये एंड ये, विजुअल अपीयरेंस देखो दोनों का अलग अलग दिख रहा है, बट दे आर सेम कंपाउंड, बोथ ऑफ देम आर 1,3 dibromobutane, है ना? दैट इज द ओनली nomenclature for both of these structures, and that's why we are saying कि we have not repeated a case, we are not leaving any case. तो ये permutation combination है ना. Now with this structure, अभी बताओ यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है? What kind of possibilities we have got? We have got 2 BR. They can be present on the same carbon. Can I put both the BR on this carbon? ये this बीच वाले पे. Can I put both the BR on this carbon? No, Nice. sir. No, sir. Why? Octet violate करेगा. It will become pentavalent carbon. That's why we can't have possibility of both the BR present on this central one, है ना? तो एक तो possibility ये होगी. अभी बाकी possibility क्या है? एक इस पे आ जाए और एक इस पे आ जाए. Any other possibility? So दोनों ऊपर दोनों? ऊपर on top. Okay, let's see. One on the center, one on the. Am I repeating the case? Yeah, yes, so sorry. दे दोनों सेम है, हाँ. है ना? So one on the So center, one one in the on middle. Yes, one on central and one on terminal. That is another case we are talking about. So Any other both, case? so BRs on both the sides. हाँ, अच्छा चलो देखते वो हैं. दोनों साइड पे. Okay, let's see. एक इधर भी है, एक इधर भी है. हाँ. Is it a different case? Is it a different case? Or I No, have second one, yeah. this is same. What happens ना? अब इसको सोचने का क्या तरीका है? The moment I have got this skeleton ना, we are saying this and this. They are symmetrical जैसा है ना, similar type के groups हो गए ना. They are all present on the same carbon. तो मैंने जब decide किया ना, I need to put both the 2 BR on 2 carbon. I can take this and this, or this and this, or this and this. They are going to give you the same result, है ना? And that's why we are saying कि we need to be very much organized. The moment you get a doubt ना, just do the nomenclature. You will find that कि दोनों का nomenclature same आया तो फिर ये right है, मतलब same ही हो गया. I have repeated the case. अगर अलग आ गया तो definitely they are two different compounds, है ना? And then we can count कि total कितना आया. There is no other possibility because open chain में यही possibility है with 4 carbon. Okay, so when we are learning C4H10, I am giving you the skeleton of 4 carbon in open chain, and we have got just 2 kind of skeleton. अब इसी में क्या है कि other atoms कुछ भी दे देगा तो उसको put करते रहेंगे. That's another one part. Any doubt in this part? तो देखो left side वाले में we have got 1 2 3 4 5 and 6, and right side वाले में we are getting ये 7th हो गया, this is 8th and this is 9th. तो फॉर सारंग तुमने पूछा था कि इज DOU सेम एज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? डेफिनेटली नॉट, है ना. DOU 0 भी हो सकता है, ये तो 9 आ रहा है. इज इट ओके? नाउ लेट्स गो टू
another case. I'm just giving you now. If I have got 5 carbon or 6 carbon, pentane and hexane wala case. And again, I'm teaching you these parts because that is also giving you the carbon का skeleton क्या क्या हो सकता है. So this is called N-pentane. This is called isopentane. This is called neopentane, है ना? But that is also giving you the idea कि whenever I'll be getting 5 carbon ना, and there is no oxygen या फिर कोई चीज जो बीच में आ सके, then we have got this skeleton with 5 carbon atoms. Okay, if I'm getting 6 carbon, I'm getting these kind of skeletons which are 5 in number. These 5 skeletons we are getting with hexane. Is it okay? इससे आगे फिर बेईमानी हो जाता है, मतलब रटते रहोगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा. 7 कार्बन के और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं. तो हाउ मेनी स्केलेटन्स वी आर गेटिंग, उसके अलग अलग नंबर्स रहते हैं. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मोड कि वहां पर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा. दे आर हैविंग डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो उसमें जाने का नहीं है, इतना काफी हो जाता है. ठीक है, एनी डाउट? नाउ अब आते हैं, इफ आई एम हैविंग DOU1, what are the possibilities with DOU1? DOU1 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है? सर तो एक एक रिंग डबल बॉन्ड या तो एक रिंग, दोनों साथ में नहीं. Either ring, one ring or one double bond. We can't have triple bond. We can't have multiple double bonds. We can't have multiple rings. So we have got two possibilities. Either we have to write one double bond or we have to take one ring without any double bond or multiple bond, है ना? चलो जरा इसकी possibility बताओ आप मेरे को. If I ask you this one. Okay, again I'm giving you caution. Any case if you are missing, any case if you are repeating, you will be getting the wrong answer and you will be getting negative marking, है ना? Like right now I've got two numbers, 6 and 10. Okay. Again I've got 6, one more 6 and one 12 also. Okay. Neil has got 12, Yash has got 6, Rehan has got 10, Mark has got 6. तो अलग अलग numbers आ रहे हैं. Again you might be recognizing कि क्या गड़बड़ हो रही है. किसी ने extra case ऐड कर लिए होंगे, किसी ने repeat कर दिया होगा, ये भी possibilities है ना. Like I'm getting 6, I'm getting 10, I'm getting 12, I'm getting, I think 6 दो लोगों ने बोला है ना. So these are the numbers we are getting, है ना. Now suppose I say that 10 is the right answer. 6 वाले ने क्या किया, बहुत सारे ऑप्शंस मिस किए ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिस कर दी. 12 वाले ने क्या किया, इफ 10 इज द राइट आंसर देन 12 वाले ने क्या किया होगा, दैट पर्सन मस्ट हैव रिपीटेड द केस, है ना. या तो उसने एक गलत ही बना दिया होगा जिसमें हो सकता है पेंटावेलेंट कार्बन वगैरह बन जा रहे हो. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. और द अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट पर्सन मस्ट हैव रिपीटेड द केस, है ना. ना इसलिए मैंने बोला इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखेंगे. नाउ C5H10 इफ यू कैलकुलेट DOU, so DOU will be
5 का डबल से 2 ज्यादा माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय 2 एंड दैट इज कमिंग 1, है ना? तो 1 की पॉसिबिलिटी 1 डबल बॉन्ड plus 0 ring, or another possibility is 1 ring या 0 double bond plus 1 ring. These are the possibilities. Now, if I have to find out open chain वाला मतलब without ring देखना है, तो we have got 5 carbon का भी just मैंने बताया, we have got 3 skeletons, है ना? 1 2 3 4 5. This is one skeleton. Another skeleton was, if I take 4 and this one, this is another skeleton, and the third skeleton is this one, है ना? Now I have to put one double bond ना, कहाँ रख सकते हैं? Can I put it here? That is one case. Yes, sir. I can put it here. That will give you second case. Can I put it here? No, sir. It will be repetition of which case? Case 2. Case 2 का, है ना? इसलिए इसको हटा दिया, इसको क्रॉस कर दिया. Can I put it here? No, sir. It is the repetition, है ना? Case ये भी 1. चला गया. Is it okay? 1 का repetition हो जाएगा ना? तो now we have got 2 ways in this skeleton in which I can put a double bond uniquely, है ना? तो यहां से अपने को आ गया 2 केस. Any doubt? मतलब वो कौन से केस है? I'll be forming 2 compounds. One is this and second is this. I cannot have any third compound with these two. Is it okay? Now if I have to put ये दूसरे वाले में, can I put it here? Yes, sir. That gives you third case. Can I put it here uniquely? That gives you fourth case. Can I put it here? No. Why? It is the repetition of which It's a one? repetition of case 3. Third. No. Why? Because this bond is also having a methyl over it. इसके ऊपर देखो methyl नहीं दिख रहा है ना? That means these are different. If I am putting it here ना, देखो जैसे मैं दिखा देता हूँ, I am writing right now it. So if I am writing this one, if I put this one, and if I give you another case where I am putting this one, and if I give you third case, if I am putting this one, they will be having different nomenclature. देख लो जरा. इसके लिए will start the number from here, है ना? So it is what? 3 methyl 1 butene. Is it okay? 3 methyl 1 butene. What about this last one? We'll start numbering from here. What is the nomenclature of this one? It is 2 methyl 1 butene. This is 3 methyl 1 butene. This is 2 methyl 1 butene. And they are different. If you see this one, we will count it from, अभी देखो इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, but this will get lesser number for the substituent, and that's why we'll number it from this direction. So this will be 2 methyl 2 butene. Understood now? So we have got 3 possibilities with this skeleton. तो left side में 2 मिला, right side में 3 मिल गए. अब ये last वाला structure देखो. Can I put any double bond in this one? No, sir. क्या हो जाएगा? Problem क्या होगी? Sir, octet valent. Sir, Central octet. carbon will become pentavalent. तो यहाँ से we are not going to get any structure. So we have got 2 from here, 3 from here, and 0 from this skeleton. Is it okay? So that's the Sir, way just you one need. question. हाँ जी बोलो. Tell me. सर आपने वो मतलब वो फिफ्थ केस में मतलब वो जो और एक कार्बन एटम है ना, हाँ, सर आपने वहां पर डबल बॉन्ड क्यों नहीं डाल सकते? वो सेम हो जाएगा. देखो, if I am putting it like this one, यही बोल रहे हो ना? नहीं नहीं सर. This one. हाँ सर वही बोल रहा हूँ. यस सर वही बोल रहा हूँ. इसका nomenclature करो जरा. I'll start the number Sir. from here, है ना? यस सर 1 2. ओ सर 2 मिथाइल. ओ अच्छा ओके ओके. समझ यस में सर. आया? This is same as this one.
Yes. तो क्या हो रहा है ना, देखो ये और इसका पोजीशन ये सिमेट्रिकल है, दोनों सेम ही पोजीशंस पे दिख रहा है ना, सेम कार्बन पे वी हैव गॉट 2 Okay. कार्बन, तो दैट्स व्हाई ऊपर रखो या नीचे रखो, हाँ, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू टू डिफरेंट, है ना, अंडरस्टूड ना? Okay. एनी डाउट इन दिस Yes. पार्ट? जो भी फ्रेम दिख रहा है तुमको, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, एनी डाउट? That's how we are going to think, so that we don't miss a case, we don't repeat a case. Is it okay? Let's go for ring. अब रिंग में क्या सोचने का है? रिंग कैन बी 5 मेंबर्ड, बिकॉज वी हैव गॉट टोटल 5 कार्बन, तो 5 ज्यादा से ज्यादा 5 मेंबर्ड रिंग हो सकता है, बट रिंग कैन बी 4 मेंबर आल्सो, रिंग कैन बी 3 मेंबर्ड आल्सो. इज इट ओके? तो अब इफ आई एम गोइंग फॉर 5 मेंबर्ड रिंग, then we have got just one possibility. I am putting all the carbon atoms here. This is the only ring possible, है ना? Now if I am talking about 4 membered ring, the moment I am putting only 4 carbon atoms in ring, I have got one extra carbon, and that can be put, that can be placed on any carbon of the ring. So this is another way. If I have got 3 membered ring, what are the possibilities? Sir, 3 possible. Okay, how many carbon atoms are left? 2 है ना? क्या क्या कर सकते हैं? Sir, They दोनों can be present on the same Ethyl डाल- carbon. Sir, They एक can be ethyl present on 2 different carbon, or what is the third One possibility? ethyl. Sir, एक हाँ, ethyl 2 कार्बन का इथाइल भी तो बन सकता है. Is it okay? And that's why total we are getting 5 from ring, 5 from open chain. Is it okay? तो इसके लिए we are getting 10 as the answer. Is it okay? अभी 12 आया था ना? नहीं, फिर बाद में नील ने, तुमने 11 बोला था. Have you repeated the case and you have identified that? Yeah. So I repeated one case. Which one? So the 2-methyl 1-butene, na, I took that. हाँ, तो that's why I'm that telling you, methyl one. अपने को बहुत ही cautious रहना पड़ेगा, because if you are losing a case, if you are repeating a case, you are not going to get the marks. In fact, you will be getting negative marks because you have reported the wrong answer. That's the tragedy of this type of question. But I'm trying my best to give you the idea. If I have got, जैसे 2 एक्स्ट्रा कार्बन आया तो क्या कर सकते हैं? 2 मिथाइल बना सकते हैं या 1 इथाइल बना सकते हैं. Both methyl can be present on the same carbon. They can be on different. तो फिर क्या क्या possibilities है ना? In that way, we can handle these kind of questions. Is it okay? तो इसके लिए I'll give you the complete list. यहाँ पे एक साथ दे देता हूँ मैं. This is the list of all the compounds, all the possibilities. ठीक है? Now let's go to next one. बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. नेक्स्ट वन इज, इफ आई एम हैविंग DOU3, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए नहीं पूछा जाता. क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है DOU3 में? क्या क्या हो सकता है बताओ? 3 डबल बॉन्ड, the 3 rings. 3 रिंग्स, और 1 ring and 1 triple हाँ, अभी bond. 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए. पहली बात तो 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस कुछ एक और 1 लेना पड़ेगा, या तो डबल बॉन्ड या तो रिंग, और 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 रिंग. ये ट्रिपल बॉन्ड के 2 केसेस हो गए. अभी इसके अलावा डबल बॉन्ड एंड रिंग में वी कैन हैव पॉसिबिलिटी 3 0 2 1 1 2 1 0 3, है ना? ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, 1 डबल बॉन्ड प्लस 2 रिंग, 0 डबल बॉन्ड 3 रिंग तो लिख ही दिया. इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होता है जाती है कि इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू. पूछ लेगा तो छोड़ के आगे बढ़ जाना. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अदरवाइज. ठीक है? क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटी लेके यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन हाफ एन आवर, है ना? दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आस्क्ड. बट इफ दे ट्राई टू आस्क यू DOU4 और मोर ना, फिर दे विल मेंशन वन थिंग, दैट यू नीड टू कंसीडर ओनली बेंजीन डेरिवेटिव्स, ऐसा बोल देंगे. if they try to ask you another case, DOU4 या ज्यादा कर देंगे ना, then they'll mention that कि only benzene and benzene derivative consider करो. मतलब जैसे मैंने एक बेंजीन रिंग बनाया, DOU कितना आ गया? This itself is covering DOU equals 4, है ना?
तो अगर उन्होंने DOU4 दे दिया है तो ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी कवर्ड। तो बाकी हम लोग ग्रुप्स देखेंगे कौन कौन से ग्रुप्स हम लोग अरेंज कर सकते हैं। DOU5 दे दिया तो वो वी हैव गॉट वन एक्स्ट्रा अनसैचुरेशन व्हिच कैन बी अ मल्टीपल बॉन्ड, है ना। तो लाइक व्हाट आई वाज सेइंग that if I am getting DOU4 जैसे इसी में, if I am getting DOU4, then already that is covered within the benzene ring. So there is no any multiple bond outside the ring or any extra ring, कुछ भी नहीं आएगा। DOU5 में we have got possibility that we have covered one benzene ring के through we have covered DOU4, extra one can be one ring or one double bond, है ना। Is it okay? चलो जरा इसका आंसर दो मेरे को। Solve these two. Okay, Rehan has got one answer. Sharang has got an answer. Udayan has got an answer, and that is different from Rehan and Sarang's answer. Okay. First job is to calculate the DOU, है ना। इसके लिए DOU कैलकुलेट किया। 18 के डबल से दो ज्यादा 8 के डबल से दो ज्यादा 18 minus 10 by 2 and we are getting 4। इसका DOU कैलकुलेट किया तो we are getting 7 के डबल से दो ज्यादा is 16 minus 8 by 2 again we are getting 4 and it has clearly mentioned that we need to consider benzene derivative, तो benzene का एक रिंग तो बना ही देना है। Now we'll see the possibility about this compound. We have got a benzene. The moment I am putting benzene ring na I have covered 6 carbon atoms, है ना। अभी बच गए दो एक्स्ट्रा and it should not have any multiple bond, है ना। Now अब ये इसमें अगर मेरे को दो कार्बन एटम्स है, क्या कर सकते हैं दो कार्बन एटम का। कैन दे बी प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। मान लो मैंने यहीं पे दो कार्बन डाल दिया, क्या हो गया। व्हाट हैज हैपेंड। Octet violet. सर ऑक्टेट हाँ, तो पेंटावेलेंट कार्बन हो गया, तो नॉट पॉसिबल। तो बेंजीन रिंग में वी कैन नॉट पुट टू थिंग्स ऑन द सेम कार्बन बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग 3 बॉन्ड्स। चौथे बॉन्ड के लिए वी कैन जस्ट पुट वन कार्बन, है ना।
So that's why if I have got, इस केस में if I have got 2 कार्बन एटम्स, एक को यहां रख दिया तो दूसरे को यहां रख सकते हैं, देन ऑर्थो मेटा पैरा वाला कंडीशन, मेटा हो सकता है या पैरा हो सकता है. एनी अदर पॉसिबिलिटी विद 2 कार्बन एटम्स, मैंने पहले भी मेंशन किया है. एनी अदर पॉसिबिलिटी विद 2 कार्बन एटम्स, इथाइल भी तो बन सकता है ना. And that's why we have got this one and we'll be putting, this is ethyl benzene, so we have got 4 possibilities only, na. Any doubt? उदयन कौन सा क्या क्या एक्स्ट्रा हो गया था? What was the extra compound? सर फर्स्ट वाला जो आपने वो, अच्छा, ये एक ही पे 2 डाल दिया ना. हाँ सर, We need to take care that कि बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप नहीं लगाने, क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड है. 2 लगाएंगे तो पेंटावैलेंट हो जाएगा ना, तो नॉट पॉसिबल. तो वी हैव गॉट, इसका आंसर विल बी 4. Okay, second में I am getting different kind of answers. 4, 5, 7, इतने तो मिले मुझे. Okay, let's see. इसमें the moment I am making one benzene ring, I have covered the 4 unsaturation and I have covered 6 carbon atoms. क्या बच गया? What is extra? सर एक कार्बन और ऑक्सीजन. हाँ, अब इसका क्या कर सकते हैं? तो आई कैन पुट, अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है. आई कैन पुट यहाँ पे OH रख दिया एंड देन मिथाइल यहाँ पे, या फिर OH के साथ मेटा पे डाल दिया मिथाइल, या फिर पैरा पे डाल दिया मिथाइल. एनी अदर पॉसिबिलिटी? सी और O को मिला के भी तो ग्रुप बन सकता है ना. व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप वी कैन मेक? OCH3 बन सकता है ना. और सर हम O के साथ एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा रख ही नहीं सकते, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 4 अनसैचुरेशन. सर नहीं, मतलब बेंजीन का एक डबल बॉन्ड निकाल के एक डबल बॉन्ड वो कर सकते हैं क्या? It says benzene derivative. The moment you are removing one double bond, it is no more a benzene derivative. Any other possibility, anyone? तो मतलब बेस बेंजीन होना चाहिए. हाँ, जो वो रिंग होना ही substituents चाहिए. will- That ring you cannot remove, है ना? Then tell me. सर मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स करेंगे, राइट? क्या क्या? हाँ, substituents में ही मतलब इसका उनका पोजीशन और है ना. अभी बताओ, अभी और क्या पॉसिबिलिटी ओके बची? सर. If I have got 1 carbon 1 oxygen, इसका क्या कर सकते हैं? I have put कि इसका मैंने OCH3 बना दिया, या फिर मैं पहले कार्बन और बाद में ऑक्सीजन भी तो रख सकता हूँ. CH2OH भी तो हो सकता था ना. That is the 5th possibility. Is it okay? Any doubt? तो इसका आंसर will be 5. Any doubt up to this point? So I'm giving you some questions as homework. Try करके रखो ये सारे questions. कुछ इसमें से करवा भी दिए, but try करोगे ये सारे. I'm putting them as homework question. Okay. Now if you see, first में we have got 7 7 में से देखो ये करवा दिया मैंने, है ना. This we have done. बाकी 3 वाला तो नहीं किया है, बाकी सब नहीं किया है. This we have done already, है ना. These 2 we have already done. Okay. इसके अलावा ठीक है, बाकी सब नहीं किया है. Now एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से. Like if I have to ask, जैसे देखो ये बनाना है, 6th वाला करते हैं, ठीक. If I just ask you 6th वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ट्राई करो, बाकी होमवर्क में कर लेना.
I'm giving you ये इधर देखो पहले वाले में we have got 6 extra questions, एक तो कर दिया है and then उसके बाद फिर 4 और, तो 10 questions you have, एक कर लेते हैं just. If I say 6th solve करना है, how to solve it? Now it is becoming specific. बहुत जब when we are having more number of carbons or very high extent of unsaturation, they will become specific. जैसे if I have got degree of unsaturation 4 or 5, I was clearly mentioning that benzene derivative ही बताना है. वैसा ही I have got 5 carbon या 6 carbon, then I am becoming I am being specific. यहाँ देखो amides लिख दिया, यहाँ ester लिख दिया. Then I have to search only esters, बाकी कुछ नहीं करना है. बताओ जरा इसका क्या होगा. C5H10O2, और इससे सिर्फ एस्टर्स ओनली निकालने हैं. सबसे पहला काम, दो चीजें हो गई. एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करेंगे एंड देन विल आल्सो चेक कि एस्टर का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है ना. एस्टर में क्या होता है, वी हैव गॉट कार्बन ओ ओ एंड देन यहां पे और यहां पे पॉसिबिलिटी है. इज इट ओके? ये तो बेसिक फॉर्मेट है ना. आई कैन पुट अल्काइल ग्रुप, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे और कोई भी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे, दैट विल मेक इट एस्टर. कैन आई पुट हाइड्रोजन हियर? हाइड्रोजन यहाँ पे रख सकते हैं क्या? हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इट कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप बट वी कैन नॉट प्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बनाते हुए एसिड बन जाएगा. इट इज नो मोर एस्टर है ना. तो यहाँ पे एनी अल्काइल ग्रुप मस्ट बी देयर बट नॉट हाइड्रोजन. बट यहाँ पे वी कैन पुट हाइड्रोजन ऑल्सो है ना. एनी अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन. हाइड्रोजन भी रखा तो दिस इज कॉल्ड मेथनोएट और अ फॉर्मेट कॉमन नेम में है ना. तो इट इज स्टिल एस्टर, बट राइट साइड में मैंने हाइड्रोजन रख दिया तो एसिड बन गया. दिस इज नो मोर एस्टर है ना. नाउ आई हैव गॉट, इफ यू सी इसका डीओयू बताओ कितना आ रहा है. व्हाट इज द डीओयू ऑफ दिस कंपाउंड? डीओयू ऑफ दिस कंपाउंड डबल से दो ज्यादा इज 12 minus 10 by 2, that is 1. And the moment I am putting the basic format of ester ना, यहाँ देखो DOU कवर हो गया है ना. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, what it is covering, it is covering 1 carbon plus 2 oxygen plus 1 DOU है ना. These many things are already taken care in this format. Is it okay? So the remaining part will not have any multiple bond or ring. ये डिसाइड हो गया यहीं पे. ठीक है. अब बाकी पॉसिबिलिटीज बताओ. तो अभी बचा हुआ क्या है? वी हैव गॉट दोनों ऑक्सीजन कवर हो गए, एक कार्बन कवर हो गया. तो नाउ वी हैव गॉट 4 कार्बन एटम्स लेफ्ट है ना, प्लस 0 अनसैचुरेशन, दैट मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और रिंग, या 0 डीओयू लिख देता हूं, प्लस 0 ऑक्सीजन. दैट मींस वी हैव गॉट ओनली 4 कार्बन लेफ्ट. अब उसको अरेंज करना है. हाउ टू अरेंज दैट? इसको मैं बोलता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी, एंड आई हैव गॉट 4 कार्बन एटम. क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सोचो. 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 है ना. 4 0 कैन नॉट बी द केस बिकॉज द मोमेंट आई एम गेटिंग ऑल द 4 कार्बन हेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन डालना पड़ेगा ना. एंड दैट्स व्हाई दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी. तो नाउ वी हैव गॉट पहली पॉसिबिलिटी है 4 कार्बन के लिए, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 0 कार्बन. नॉट पॉसिबल क्योंकि दैट विल गिव यू एसिड. बट if I have got 3 carbon plus 1 carbon, how many possibilities we are seeing for this one? 3 कार्बन का क्या क्या कर सकते हैं? 3 कार्बन का कितना अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं?
we can put it like CH3 CH2 CH2, है ना, this is one alkyl group. और 3 कार्बन वाला बता रहा हूँ, 1 कार्बन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट इज जस्ट 1 CH3 रख देंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन के साथ ये पॉसिबिलिटी हो गई। और वी कैन हैव आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना, CH3 CH3 and CH and this one, है ना, this is the possibility. So that's why we are getting 2 possibilities out of it, है ना. Is it okay? If I am getting 2 carbon plus 2 carbon, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ इथाइल इथाइल रखना होगा, 2 कार्बन के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। If I am getting 1 carbon plus 3 carbon, now tell me how many possibilities we are getting? जैसा ये केस था वैसा ये केस है ना, 3 कार्बन की 2 पॉसिबिलिटी है, तो दैट्स व्हाई विल बी गेटिंग 2 केसेस. Now, last case is if I'm not putting any carbon on the left side, I'm putting hydrogen there, then I'll get 4 carbon. 4 carbon की कितनी possibility हो सकती है? That means how many butyl groups you can make? If I have got 4 carbon, उसका एक alkyl group बनाना है, how many possibilities are there? Okay, let's see. पहली बात तो 4 कार्बन के 2 ब्यूटेन वाले स्केलेटन बन रहे थे ना, बट ब्यूटाइल ग्रुप कितने बन सकते हैं? नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ब्यूटाइल ग्रुप्स यू कैन हैव, तो मैं एक टेबल दे दे रहा हूं तुमको जस्ट टू हेल्प यू, कि कभी भी ऐसा आ जाएगा ना, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी कैन गेट in the form of alkyl group, again without any unsaturation. I'm giving you that data so that will help you in future. If I have got methyl group, there is just one possibility, and एक carbon है तो there is just one possibility, it is CH3. If it is ethyl group, then we have got only one possibility, that is CH2 CH3. If I am having propyl, so like I told you, I can have CH2 CH3 CH3, or we can have CH CH3 CH3, इसको बोलते हैं isopropyl. If I have got butyl group, then we are having 4 possibilities. It can be सीधा सीधा open एक without branching वाला. It can have 3 कार्बन का चेन. अच्छा 4 वाले में ग्रुप में यहां से बना सकता हूँ, यहां से भी बना सकता हूँ, ठीक है, इस स्केलेटन में. ये वाले स्केलेटन में अब मैं यहां से निकाल सकता हूँ, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. ये वाला जो फॉर्मेट बना है उसमें मैं यहां से निकाल और एक ब्यूटाइल है, तो वी आर गेटिंग 4 काइंड ऑफ ये. इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड सेक ब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल. ओके, तो दीज काइंड ऑफ 4 ब्यूटाइल ग्रुप्स. पेंटाइल कभी पूछेगा नहीं, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज. तो 1 कार्बन और 2 कार्बन वी हैव गॉट 1 पॉसिबिलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप. 3 कार्बन के साथ वी आर गेटिंग 2 पॉसिबिलिटी. 4 कार्बन के साथ वी आर गेटिंग 4 पॉसिबिलिटी, and 5 carbon के साथ we are getting 8 possibility. 5 will not be asked, but this much is important. This is important. इतना ध्यान में रखोगे तो प्रोफाइल तो इमेजिन करना इजी है, ब्यूटाइल में थोड़ा दिक्कत होता है, बट यू जस्ट रिमेंबर ना, पहले दूसरे में 1 1 आया था, फिर 2 और फिर सीधा 4 होता है, 1 2 4 ऐसा, ठीक है. तो these are the kind of variations. So if I have got 4 carbon, like I told you, we can have ब्यूटाइल के 4 possibilities हो सकती है, and that's why we can get 4 variations, है ना. तो यहां से we have got 2 variation, यहां से 0 मिला, 2 1 2 4. How many possibilities total? Is it okay? तो 9 आ गया. You don't have to draw all the structures, so 9 will be the answer for this one. Any doubt in this part? This will be the answer. It was just to give you the idea कि कैसे organized way में you have to work so that you don't lose a case, you don't repeat a case. Any doubt in this part? चलो, तो अभी क्या करना है ना, ये सारे होमवर्क जो मैंने दिए ना, इसको ट्राई टू फिनिश इट. वंस यू हैव गॉट द आंसर ना, तो मेरे से पूछ सकते हो, आई विल गिव यू द आंसर्स क्या आ रहे हैं इसके. डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट क्लास में सारे डिस्कस करेंगे तभी. द मोमेंट यू आर गेटिंग ना, जस्ट आस्क मी, आई विल सेंड यू द आंसर्स. दैट्स वन पार्ट.
इन सबको ट्राई करके रखोगे. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लाइक चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजिशनल क्या है, रिंग चेन क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है. देन विल गो इन डिटेल ऑफ दिस समथिंग कॉल्ड टॉटोमेरिज्म. उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब बहुत एक क्लास में हो जाएगा. ठीक है, तो वन क्लास विल कवर ऑल द अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म and then 1 or 2 lecture will be on tautomerism. Okay, tautomerism is just a special type of functional isomerism only. तो लेकिन उसमें ज्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे. तो नेक्स्ट क्लास विल कवर ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन वी विल एंटर इनटू टॉटोमेरिज्म व्हिच इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओनली. विल डू दैट, है ना. चलो फिर यहीं पे फिनिश करते हैं आज का लेक्चर, है ना. नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद दिस वन. तो सैटरडे का लेक्चर विल बी सेम ऑन आइसोमेरिज्म ही करेंगे और उसके बाद फिर आइनिक पे जाएंगे. ओके, चलो जी, बाय एवरीवन. Bye, sir.